हेलो फ्रेंड्स, द क्वालिटी कंटेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अपन ने इसका पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लिया है। उसमें अप्रोक्स अपन ने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो कि कंप्यूटर में पूछे जाते हैं वो अपन ने उस पार्ट पे डिस्कस कर लिया। तो अगर जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देख लेना और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छा, एक बात ये है कि अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, तो अपन पार्ट 2 को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला फुल फॉर्म है यहाँ पे सेप। द सेप स्टैंड्स फॉर system application and products. The SAP stands for system application and products. Okay, moving to the next full form, that is GIS. The GIS stands for geographical information system. The GIS stands for geographical information system. Okay, moving to the next full form, that is SMPS. The SMPS stands for switched mode power supply. The SMPS stands for switched mode power supply. Okay, moving to the next full form, that is SATA. The SATA stands for serial advanced technology attachment. The SATA stands for serial advanced technology attachment. Moving to the next full form, that is SMS. The SMS stands for short message service. The SMS stands for short message service. अच्छा, जो भी इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एंड द फर्स्ट फुल फॉर्म इज ATM. द ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन. द ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर machine. Okay, moving to the next full form, that is ADSL. The ADSL stands for asymmetric digital subscriber line. The ADSL stands for asymmetric digital subscriber line. Okay, move to the next full form, that is API. The API stands for application programming interface. The API stands for application programming interface. Okay, नेक्स्ट फुल फॉर्म की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो ICT. द ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. द ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, नेक्स्ट फुल फॉर्म की बात करते हैं अपन यहाँ पे LIFO. द LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट. द LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपन. अब है फुल फॉर्म FIFO. द FIFO स्टैंड्स फॉर FIFO. द FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. Okay, moving to the next full form, that is GIGO. The GIGO stands for garbage in, garbage out. The GIGO stands for garbage in, garbage out. Moving to the next full form, that is PCX. The PCX stands for picture exchange. The PCSX stands for picture exchange. Okay, moving to the next full form, that is TIFF. The TIFF stands for tagged image file format. The TIFF stands for tagged image file format. ठीक है, अच्छा, ये जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म डिस्कस किए हैं वो आपको पूरा समझ में आए और जब आप एग्जाम देने जाए तो आपसे कुछ भी जो भी फुल फॉर्म हमें पूछे जाते वो छूटे ना. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज IMAP. The IMAP stands for Internet Message Access Protocol. The IMAP stands for Internet Message Access Protocol. Okay, moving to the next slide, and the next full form is SNMP. The SNMP stands for Simple Network Management Protocol. The SNMP stands for Simple Network Management Protocol. अच्छा, नेक्स्ट फुल फॉर्म की बात करते हैं अपन यहाँ पे POP. POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. POP का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, वो केमिस्ट्री में होता है. अच्छा, POP का फुल फॉर्म कंप्यूटर में क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. Okay, moving to the next full form, that is VDU. The VDU stands for Visual Display Unit. The VDU stands for Visual Display Unit. Okay, moving to the next full form, that is FTP. The FTP stands for File Transfer Protocol.
The FTP stands for File Transfer Protocol. Okay, moving to the next full form, that is AI. The AI stands for Artificial Intelligence. The AI stands for Artificial Intelligence. Okay, moving to the next full form. Next slide, and the next full form is BIN. The BIN stands for binary. The BIN stands for binary. Moving to the next full form, that is BINEC. The BINEC stands for binary automated computer. The binary stands for the BINEC stands for binary automated computer. Okay, moving to the next full form, that is CC. The CC stands for carbon copy. Moving to the next full form, that is DBMS. The DBMS stands for database management system. The DBMS stands for database management system. Okay, moving to the next full form, that is DAC. The DAC stands for digital to analog converter. The DAC stands for digital to analog converter. Okay, moving to the next slide, and the next full form is ADC. The ADC stands for analog to digital converter. The ADC stands for analog to digital converter. Okay, moving to the next full form, that is CU. The CU stands for controlling unit. The CU stands for controlling unit. Moving to the next full form, that is IT. The IT stands for information technology. The IT stands for information technology. Moving to the next full form, that is OOP. That is object oriented programming. The OOP stands for object oriented programming. Okay, moving to the next full form, that is SaaS. The SaaS stands for software as a service. The SaaS stands for software as a service. Okay, moving to the next slide, and the next full form is QR. The QR stands for quick response. The QR stands for quick response. Okay, moving to the next full form, that is UI. The UI stands for user interface. अच्छा, ये जो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज यूएलएसआई. द यूएलएसआई स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. द यूएलएसआई स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज वाईफाई. द वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फीडेबिलिटी. The Wi-Fi stands for wireless feedability. Moving to the next full form, that is B2B. The B2B stands for business to business. The B2B stands for business to business. Moving to the next slide, and the next full form is DB. The DB stands for database. The DB stands for database. Moving to the next full form, that is DHTML. DHTML, that is dynamic hypertext markup language. The DHTML stands for dynamic hypertext markup language. Okay, moving to the next full form, that is DPI. The DPI stands for dots per inch. The DPI stands for dots per inch. Okay, moving to the next full form, that is HDD. The HDD stands for hard disk drive. The HDD stands for hard disk drive. Okay, moving to the next full form, that is EDP. The EDP stands for electronic data processing. Electronic data processing. Moving to the next slide, and the next full form is EOF. The EOF stands for end of file. The EOF stands for end of file. Okay, moving to the next full form, that is UPI. The UPI stands for Unified Payment Interface. The UPI stands for Unified Payment Interface. Moving to the next full form, that is NPCI. The NPCI stands for National Payment Corporation of India. The NPCI stands for the National Payment Corporation of India. Okay, moving to the next full form, that is IRCTC. The IRCTC stands for Indian Railway Catering and Tourism Corporation. The IRCTC stands for Indian Railway Catering and Tourism Corporation. Okay, moving to the next full form, that is UAV. The UAV stands for Unmanned Aerial Vehicle. The UAV stands for Unmanned Aerial Vehicle. Okay, moving to the next slide, and the next full form is RP. The RP stands for Robotics Process Automation. The RP stands for Robotics Process Automation. Okay, moving to the next full form, that is STL. The STL stands for Standard Tessellation Language. The STL stands for Standard Tessellation Language. Okay, moving to the next full form, that is LPI. The LPI stands for Lines Per Inch. Okay, moving to the next full form, that is ISDN. The ISDN stands for Integrated Service Digital Network. The ISDN stands for Integrated Service Digital Network. Okay, moving to the next full form, that is BPL. The BPL stands for Broadband over
power line. The BPL stands for broadband over power line. Okay, moving to the next slide. In the next full form is OSI model. The OSI stands for Open System Interconnection Model. The OSI model stands for Open System Interconnection Model. अच्छा, एक बात ये और आपको बतानी थी कि ये जो अपन लेक्चर पूरा डिस्कस कर रहे हैं, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, ताकि जब भी आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करो तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज ER मॉडल. द ER मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप model. The ER model stands for entity relationship model. Okay, moving to the next full form, that is iOS. The iOS stands for iPhone operating system. The iOS stands for iPhone operating system. Okay, moving to the next full form, that is IMI. IMI. The IMI stands for International Mobile Equipment Identity. The IMEI stands for International Mobile Equipment Identity. Moving to the next full form, that is LCD. The LCD stands for Liquid Crystal Display. The LCD stands for Liquid Crystal Display. Okay, moving to the next slide. And the next full form is PC. The PC stands for Personal Computer. The PC stands for Personal Computer. Moving to the next full form, that is PD. The PD stands for Pen Drive. The PD stands for Pen Drive. Okay, moving to the next full form, that is URN. The URN stands for Uniform Resource Name. The URN stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम. अच्छा, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि अपन ने कुछ सीखा है, तो इसको अभी कभी लाइक करें, क्योंकि देखो अगर आप लाइक करेंगे तो लाइक जो होता है वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है. अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छा डिज़ाइन करूँगा, और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा उसको अपन रोजाना डिस्कस करेंगे. अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज URN. द URN स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम. The URN stands for Uniform Resource Name. Okay, moving to the next full form, that is SQL. The SQL stands for Structured Query Language. The SQL stands for Structured Query Language. Okay, moving to the next full form, that is TTS. The TTS stands for Text to Speech. The TTS stands for Text to Speech. Okay, moving to the next full form, and the next slide, that is QoS. The QoS stands for Quality of Service. The QoS stands for Quality of Service. Okay, moving to the next full form, that is QBE. The QBE stands for Query by Language. The QBE stands for Query by Language. Okay, moving to the next full form, that is PSU. PSU का फुल फॉर्म यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे होगा पावर सप्लाई यूनिट. द PSU stands for Power Supply Unit. Okay, moving to the next full form, that is GIF. The GIF stands for Graphics Interchange Format. The GIF stands for Graphics Interchange Format. Okay, moving to the next full form, that is IM. The IM stands for Instant Message. The IM stands for Instant Message. Okay, moving to the next slide. The next full form is ISP. The ISP stands for Internet Service Provider. The ISP stands for Internet Service Provider. ठीक है, नेक्स्ट फुल फॉर्म की बात करते हैं BIT. The BIT stands for Binary Digit. The BIT stands for Binary Digit. Okay, moving to the next full form, that is EEPROM. EEPROM, that is Electronic Erasable Programmable Read Only Memory. The EEPROM stands for Electronic Erasable Programmable Read Only Memory. Okay, moving to the next full form, that is GPU. The GPU stands for Graphics Processing Unit. The GPU stands for Graphics Processing Unit. Okay, moving to the next full form, that is DFD. The DFD stands for Data Flow Diagram. The DFD stands for Data Flow Diagram. Okay, move to the next full form, and the next slide, that is MLL. The MLL stands for Medium Level Language. The MLL stands for Medium Level Language. Okay, move to the next full form, that is TFT. The TFT stands for Thin Film Transistor. The TFT stands for Thin Film Transistor. Okay, move to the next full form, that is SDD. The SDD stands for Super Density Disk. Okay, move to the next full form, that is CUI. The CUI stands for Character User Interface. The CUI stands for Character User Interface. Okay,
Moving to the next full form, that is DNS. The DNS stands for Domain Name System. The DNS stands for Domain Name System. Okay. Moving to the next slide, and next full form is FDD. FDD stands for Floppy Disk Drive. The FDD stands for Floppy Disk Drive. Okay. Move to the next full form, that is JS. The JS stands for JavaScript. The JS stands for JavaScript. Okay. Move to the next full form, that is MMS. The MMS stands for Multimedia Messaging Services. The MMS stands for Multimedia Messaging Services. Okay, move to the next full form, that is Microsoft Network. Microsoft Network. Okay, move to the next full form, that is PAN. The PAN stands for Personal Area Network. The PAN stands for Personal Area Network. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही. फिर अपन इसके लगभग 2 पार्ट और बचे, जिसमें अपन जो भी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रह गए कंप्यूटर के और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको अपन उन 2 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे. मतलब ये 2 पार्ट में फुल फॉर्म का काम पूरा खत्म हो जाएगा. फिर अपन जितने भी शॉर्टकट कीज होती है कंप्यूटर में, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोस है नए, उनका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके. ठीक है, थैंक यू.